नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस एंड रिजर्व्स। ठीक है, क्लियर ये टॉपिक। इसके अंदर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट है, कोई बंदा नया आ रहा है, अभी दोनों इसलिए रिपीट कर रहा हूं, दोनों में ट्रीटमेंट समझने की जरूरत है, एक क्लियर हो जाएगा, दूसरा अपने आप। जब भी कोई पुराने प्रॉफिट्स या लॉस या रिजर्व्स बचे हुए हैं, भले वो एडमिशन की बात करें, कोई बंदा नया आ रहा है, या रिटायरमेंट की बात करें, कोई बंदा जा रहा है, उस समय ये जो भी प्रॉफिट्स लॉस या रिजर्व्स है, वो ऑलवेज ओल्ड पार्ट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जैसा देखना है इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। मैं क्या लिख रहा हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। ठीक है, क्लियर। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड between old partner in old ratio। ठीक है, क्लियर। अब एक और एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, इसके अलावा एनी अदर लॉस सभी कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। being loss distributed in old partner in old ratio। ठीक है, क्लियर। ये चीज हम लोग में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो मिडिल ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। उस केस में अगर कोई प्रॉफिट है मिडिल ऑफ द ईयर का, तो हमेशा वो पीनल सस्पेंस अकाउंट से पे होगा। किससे होगा, अगला टॉपिक और बता देता हूं मैं। व्हेन पार्टनर रिटायर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग का मतलब मिडिल ऑफ द ईयर। अब जितना टाइम रहा उसके अंदर अगर कोई फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो जो बंदा जा रहा है उसका भी राइट होता ही होता है।
तो उसकी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या बनेगी आपकी, वो एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक being middle year profit given। ठीक है, कोई डाउट? सस्पेंस अकाउंट पीडल सस्पेंस ही होता है जब मिडिल ऑफ द ईयर में होता है, तो पीडल सस्पेंस या पीडल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। बट यहाँ नॉर्मली क्या बोला हुआ है, पीडल सस्पेंस, तो हमें क्या करना है, पीडल सस्पेंस ही। क्लियर? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, सेटलमेंट। ठीक है, उसमें या तो हो सकता है होल अमाउंट पेड इन वन इंस्टॉलमेंट, एक साथ पेमेंट कर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर, रिटायरिंग पार्टनर इन वन इंस्टॉलमेंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर? सेकंड केस में क्या हो सकता है, पेमेंट मेड पार्ट इन कैश and remaining as a loan, ठीक है, क्लियर? यहाँ पर हमको ध्यान में रखिए। यहाँ पर आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, पार्ट पेमेंट। ठीक, अब थर्ड, टोटल अमाउंट ड्यू is transferred to loan account. Total amount due is transferred to loan. तो उस केस में हो जाएगा आपका रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, अब लोन है तो इंटरेस्ट भी होगा और फिर आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। ठीक है, लोन में ट्रांसफर हो गया, इसके आगे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट आज में कल इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंटरेस्ट ड्यू होगा या नहीं होगा, होगा ना।
तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। ठीक है, क्लियर। और देन आएगा इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पे भाई इंटरेस्ट ड्यू हुआ और इसकी जो इंस्टॉलमेंट की हो तो पे करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश ऑब्लिक क्लियर। ये इंटरेस्ट ड्यू है, ये हमने उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर। ये तो है या तो पूरा पैसा दे दिया या फिर लोन में ट्रांसफर कर। लोन के बाद जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन पहले क्या होगा, ऑन ड्यू डेट ऑन उस दिन इंटरेस्ट ड्यू होगा और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। क्लियर।